ओके स्टार्ट करिबा कोराल लीफ आई होप समस्त देखिथिबे प्रैक्टिकली न देखिले नहीं किंबा आपण टीवी रे किंबा फोन रे मध्ये देखिथिबे वीडियोस रे देखिथिबे कोराल लीफ कोन एक्चुअली सो कोराल लीफ होची बेसिकली कैल्शियम एक्युमुलेशंस रे फॉर्मेशन हेइथाय जो आपण मूंगा कहितांती वेरियस कलर्स रो थाय एंड तार फॉर्मेशन बहुत ही यूनिक पाए रे हेइथाय we can say like dita like organisms ର combinations ରେ coral leaf formation ହେଇଥାଏ जोटा कि like बहुत सारा फिशेस ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓशन ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଫିशेस ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏବେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ବା ଏକ୍ସେସିଭ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋରାଲ ଲିଫ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିଥାଉ କୋରାଲ ବ୍ଲିଚିଂ So first thing is coral. Corals are nothing but calcareous rocks formed from the skeleton of minute sea animals called polyps. तो minute sea animals माने जो गुड़ाक small amount रे थांती small small like diameter रो बहुत ही क्षुद्र प्राणी माने थांती जोटा कि those are known as minute sea animals and तांको देहरु ही coral leaves formation होता है केमती उपाय रे like calcareous rocks and form from skeleton of minute sea जेतले ई minute seas गुडा sea animals गुडा को मरी जाती like phytoplanktons zooplanktons तांको भीतर थिबा calcium accumulation जो गुडा थाए से गोटे जगह रे accumulate हे कि से कौन फॉर्मेशन करे पॉलिप्स फॉर्मेशन करे तो जानिबा पॉलिप्स कौन The polyps extract calcium salt from sea water to form hard skeleton. Now polyps होची गोटे small you can say small soft organisms right and ये कौन करे सेही calcium गुडी को attract करे इन ता तळे जो बेसमेंट एरिया अछि सेतली से जमा करे सो polyp extract calcium salt from sea water to form hard skeletons पॉलिप्सटा होची सॉफ्ट जीवडा ताकू स्टेबिलिटी पाई गोटे निहाती भाबरे गोटे स्टेबल लैंड दरकार स्टेबल सरफेस दरकार तो सेही स्टेबल सरफेस को से क्रिएट करिया पई कोन करे पानी रे जितले सब मरी जाई थांती मिनिट सी एनिमल्स गुडा को किबा जू प्लांक्टन्स फाइटोप्लांक्टन्स ताको देहरु से कैल्शियम एक्युमुलेट करी की बेस लाइन ने से जमा करे व्हिच प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी दिस स्केलेटन गिव्स राइज टू कोरल्स आ ए जो सॉफ्ट बॉडी ये कोन करे ये बेसिकली गोटे मीडिएटर हिसाब रे काम करे ओके आगो को जाय कि हमें जानिबा कि कहा ठारू ये लाइक कौन हेल्प निए एंड तापरे बेस को तारो स्ट्रांग बनाए किंतु जते जते ये बेस को स्ट्रांग बने जिवो सेते सेते हमर कोरल लीफ गुडी को फॉर्मेशन हे जिवो राइट सो द कोरल लीव्स इन colonies fastened on rocky sea floor एमाने कॉलोनी ना एक स्ट्रक्चर रहंती राइट आइसोलेट है कि से माने रुहंतिनी कॉलोनी लाइक जदी फिगर देखि पते पूरा एरिया रे कवर की थांती माने कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर एंड न्यू जनरेशन डेवलप ऑन स्केलेटन्स ऑफ डेड पॉलिप्स सो गोटे पॉलिप्स जो कॉलोनी से डेड हे गला परे आ गोटे टाइप रो कॉलोनी बा आ गोटे न्यू फॉर्मेशन हुए पुणी एमती प्रक्रिया कंटीन्यूअस मैनर चलते जेते पर्यंत एमाने ग्रो करूनांती तो एटा हुए कोन सपोज गोटे जगह रे एठी लेट्स से गोटे जगह रे कोरल लीफ फॉर्मेशन हिची नाउ तार गोटे टाइम पीरियड अछि सेति के सर्टेन टाइम पीरियड रे तार डेथ हि जिवो किबा नष्ट हे गला पर कोन हे जिवो ए जो ब्लीच करि गला पर सेठी आउ किछि गुडा को जमा हे जिवे पुणी से माने फॉर्मेशन करिवे एमती धीरे धीरे करि कि से पूरा एरिया कवर करिवो ओके सो द ट्यूबुलर skeleton grow upward and outward as a cemented calcareous rocky mass collectively called corals ताले कोरल का कुआ जाय जो सीमेंटेड कैल्सीरियस रॉकी मास अछि ताकू ही कुआ जाय कोरल्स यार डिफरेंट शेप्स थाई डिफरेंट स्ट्रक्चर थाई डिफरेंट कलर थाई तो मूल जिंस कोन कैल्शियम okay cemented calcareous rocks मन रहला so the shallow rocks created by this deposition is called reef ए जो shallow rock रो colonies धीरे धीरे फॉर्मेशन हवा पई चले सपोज एई प्लेस रो स्टार्ट करके ए जो धीरे धीरे सब जगह को कवर करी चले these are known as reef so what is coral सेटा क्लियर ले and what is coral leaf सेटा मध्ये क्लियर ले coral leaf टा upgraded version of corals okay good elongated format रे it is known as coral leaf so shallow rock created by this deposition is called reef and these reefs later on evolve into island ए reef गुडे को धीरे धीरे accumulate हे कि गोटे island formation करंती according to this data okay जोटा कि हम जनरल खाली जानिबा कथा किंतु तार रिलेटेड थ्योरी में पढिबा ऑप्शनल पई खाली एबे पर्यंत एतिकी जानि थांतु कि these reefs later on evolve into island
ओके आइलैंड फॉर्मेशन पुणी से कॉन्ट्राडिक्ट करिवो आइलैंड फॉर्मेशन केतेले हुए आगे कोरल लीफ्स हुए तापर आइलैंड हुए ना आगे आइलैंड हुए तापर कोरल लीफ्स हुए हमें थ्योरी पार्ट रे पढिबा ओके खाली एतिकी जानि थांतो then the coral occur in different forms and colors depending upon the nature of salt or constituents they are made of को सॉल्ट रो एक्युमुलेशन केते मात्रा रे हुए सेटा ही डिपेंड करे गोटे कोराल रो कलर डिसाइड करिया पई राइट सो कोराल रेड कलर हबो कि येलो कलर हबो कि ट्यूबुलर फॉर्मेट रे हबो किबा ब्लू कलर हबो किबा लाइक सी ग्रीन कलर हबो ए सब डिपेंड करे तार सॉल्ट कंपोजिशन ऊपर जेमति भाबरे सॉल्ट गुडी को एक्युमुलेट हेकि रहबे से अकॉर्डिंगली तार लाइक स्ट्रक्चर एंड तार कलर हबो सो द कोरल्स ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड कलर ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रे सेटा देखि पारते हेमिस्फेरिकल ट्यूबुलर ओके देन ब्रांचिंग एटसेट्रा so depending upon nature of salts or constituents they are made of now the progressive development of corals appear over sea surface right in different forms over a period of time वेरियस फॉर्म्स रे एगुडा सी सरफेस रे देखिया पई मिले वेरियस टाइम पीरियड रे ये धीरे धीरे ग्रो करे नाउ स्मॉल मेरीन प्लांट्स जोटो कि हमें आल्गी कहताऊ आल्सो डिपोजिट कैल्शियम कार्बोनेट एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टू द कोरल ग्रोथ नाउ टिके पूर्व मु कहतली पॉलिप्स रो काम पॉलिप्स कोन करे पॉलिप्स जो सॉफ्ट बॉडी टा थाए ता तळे बेसमेंट एरिया रे कोरल फॉर्मेशन करे एंड सी कोन करे बेसिक तार काम कोन कैल्शियम से एक्युमुलेट करिवो फिल्टर करके बेसमेंट रे जमा करिवो किंतु आम देखुचे जदि पानी रो ऊपर भाग रे किए अछि आल्गी अछि तो आल्गी कोन करछि फोटोसिंथेसिस करूछि फोटोसिंथेसिस द्वारा सेठी गोटे अलग ऑर्गेनिजम्स मध्य काम करे सो दैट ताकर एक्युमुलेशन फल रे कोरल लीफ्स को खाद्य मिल जाए खाद्य कहूछि कोरल लीफ्स को तार कैल्शियम मिल जाए ओके एंड सो पॉलिप्स को से तार बंचिबार लाइक से जो क्लोरोफिल से कोन करे निजर बंचिया पई जति सब एनर्जी दरकार सी फिल्टर करके निए सो देखिबा कोरल इज मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स called polyps okay and these polyps have microscopic algae called zooxanthella right এই जो algae गुडा को थांती माइक्रोस्कोपिक algae जोटा कि बहुत ही छोट ओके आमे कहि परिबा सो पॉलिप्स रे जो माइक्रोस्कोपिक algae गुडा को थांती those are known as zooxanthella living within their tissue now these corals the corals and algae have a mutualistic relation तो corals रो और algae रो परस्पर भितर संबंध अछि केमती ना coral provides the zooxanthella with the compound necessary for photosynthesis okay coral provides the zooxanthella with the compounds necessary for photosynthesis in return the zooxanthella supply coral with organic product ना ऊपर जो से algae ठारू आनिला से coral को कोन दबो organic product दबो of photosynthesis like carbohydrates which are utilized by coral polyps जोटा कि से soft tissue थाई polyps coral polyps तक को जाय से ताको यूज करिवो यूटिलाइज करिवो for synthesis of their calcium carbonate skeleton तारो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन को आहुरी ग्रो करिया पई से ताको यूज करिवो तो ताको भितर गोटे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप थाए ऊपर थाई आल्गी आल्गी से कोन करिवो फोटोसिंथेसिस माध्यम रे से लाइक नेसेसरी कंपाउंड नेसेसरी ऑर्गेनिक मटेरियल से प्रोवाइड करिवो तो पॉलिप्स कोन करिवो ताको फिल्ट्रेशन प्रक्रिया रे नै कि निजो को लाइक स्ट्रांग करिकि बा निजर जति की दरकार सेति यूज करिकि बाकी सब छाड़ देबो तार बेसमेंट एरिया रे बा बेसमेंट रे जो कोरल्स लीफ गुडा को जमा हेकि रहितांती एंड से कोरल लीफ धीरे 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 ग्रो करिवे राइट सो इन एडिशन टू प्रोवाइड कोरल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक zooxanthella mark this word this is zooxanthella okay zooxanthella are responsible for unique and beautiful color of corals आमे टिके पूर्व पढ़ितले कि स्ट्रक्चर आ कलर ये को किए डिसाइड करे ना एक्युमुलेटेड सॉल्ट डिसाइड करे ना से एक्युमुलेटेड सॉल्ट सहित किए ट्रिगर करे बा से किए फ्लिप करे बेसिकली किए यूज करे केते परसेंट कोठी जीवो से उडा को सब काम ऑफ कहार ना zooxanthella रो तो सी रेस्पोंसिबल फॉर द यूनिक एंड ब्यूटीफुल कलर ऑफ कोरल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी व्हाई because rainforest रे मैक्सिमम स्पीसीज हमको देखिया पे मिले एंड लॉट्स ऑफ स्पीसीज जदि हम टेरिटोरियल पार्ट को जिबा ताले होल ओवर द वर्ल्ड जते भी स्पीसीज अछि सबुठारो बेसी स्पीसीज हमको रेन फॉरेस्ट एरिया रे ही देखिया पे मिले किंतु जदि हम ओशनिक पार्ट को आसीबो ताले हमको कोठी देखिया पे मिलिबो
कोराल रीफ्स रे देखिया पे मिलबो हमको पूरा लोअर एरिया बा जोटा कि हम कहितो बायसाल प्लेन रे सेठी हमको देखिया पे मिलबोनी कोराल रीफ्स रे सब बेले देखिया पे मिलबो बिकॉज़ एठी एक्टिव फॉर्मेट रे सब किछि प्रोसेस चलथाय फोटोसिंथेसिस रु स्टार्ट करी ऑक्सीजन रु स्टार्ट करी नेसेसरी न्यूट्रिएंट रु स्टार्ट करी सब गुडी को कंटीन्यूअस मैनर हेताय एंड सेठी सब फिशेस माने सेठी पई जमा ही थांती ओके सेठी से माने रुहंती now further there are two types corals are two types one is hard coral second is soft coral so they extract calcium hard coral कौन करे ना they extract calcium carbonate from sea water to build hard ओके ये कौन करे कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करे जो समुद्र पानी रे जहां भी कैल्शियम अछि लाइक जते भी हम मिनिट सी एनिमल्स गुडी को मरी जेतांती ताको स्केलेटन ही कैल्शियम मैक्सिमम हमको मिले एंड विथ white colors exoskeleton like hard coral produce a rigid skeleton made of calcium carbonate जो hard coral leaf अछि से गोटे rigid गोटे tight गोटे strong skeleton से बनाए सेतरे कोन थाय calcium carbonate in a crystal form called aragonite okay crystal format रे थाय जोटा की कुआ जाय aragonite and they are the primary reef building corals कोटा ना hard corals are the primary reef building corals and hard corals that forms reefs are called coral hermatyph corals okay जो हार्ड कोराल्स गुडी को कौन फॉर्मेशन करंती हार्माटाइफिक कोरल फॉर्मेशन करंती and then come to soft corals so soft corals does not produce a rigid calcium carbonate skeleton and do not form reef though they are present in the reef in a reef ecosystem जदियो सॉफ्ट कोराल्स गुडी को reef ecosystem रे थांती बट स्टिल से माने गोटे reef formation करंती नहीं जस्ट खाली स्टेबिलिटी मेंटेन करिया पई थांती एंड द सॉफ्ट कोराल्स आर आल्सो मोस्टली कॉलोनियल जो सॉफ्ट कोराल्स गुडा को थांती से माने मध्ये कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर रहया पई पसंद करंती बा सेमती स्ट्रक्चर रही जानती सो what appears to be single large organism is actually a colony of individual polyps combined to form a large structure visually okay and soft coral colonies and to resemble trees bushes fans waves and grasses ताले हमें कौन बुझिलु जोटा में पिक्चर देखुछु जस्ट अ मिनिट मु आपन को पिक्चर देखे दूची सो ई पिक्चर जोटा की देखा होची दिस पिक्चर रे एठी कोन हमें गोटे कोरल लीफ अछि बोली हमें केतेले कहि परबे लॉट्स ऑफ कोरल लीफ्स आर देयर बिकॉज़ माने कॉलोनी फॉर्मेट रे रहंती right so then significance con they support over 25% of marine diversity even though they take up only 1% of sea floor पूरा सी फ्लोर जोटा अछि वर्ल्ड वाइड जदि हमें तार 1% काढिबा तले 1% टू बी कम एंड पाखापाखि 1% पर्यंत कोरल लीफ गुडी को पूरा वर्ल्ड रे अछंती किंतु से माने सपोर्ट करंती केते ना 25% ऑफ मेरीन डाइवर्सिटी नाउ ये आपनकर मेंस एग्जामिनेशन पई एथि पई इंपोर्टेंट ए जो पर्टिकुलर लाइन टी बिकॉज़ ये आपनको टूरिज्म सेक्टर रे इंप्रूव करे आपनको इकोनॉमिकली एंड जो ओशनिक पार्ट रे मध्ये स्ट्रांग कराए बिकॉज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी एसटी अछंती ओके सो सब क्षेत्र रे हमको हेल्प करे सबुतरे यार सप्लाई एंड चेन क्रिएट करिवार से चेष्टा माने लाइक आगरे थाई सो 25% ऑफ मेरीन डाइवर्सिटी जदी अछि ए 1% सी फ्लोर जो एरिया रे कोरल लीफ रे ताले केते ये कंट्रीब्यूट करतबो नेचर को ओके सो आइडियल कंडीशन फॉर कोरल ग्रोथ एबे गोटे क्वेश्चन आसीबो कि कोरल ग्रोथ कोरल कोन सब जगह देखा जाय पूरा वर्ल्ड रे ना कोरल केवल मात्र गोटे पर्टिकुलर कंडीशन ने देखा जाए से पर्टिकुलर लाइन कोठु कहती हमें देखिबा सो कोरल थ्राइव इन ट्रॉपिकल वाटर्स बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड सो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड भितरे हमको प्रोमिनेंटली कोरल्स गुडी को देखिबा पे मिले ता ऊपर को हमें जते लैटिट्यूड ऊपर को जिबा सेते हमको कोरल लीफ्स कम कम जिबो एवं पोलर रीजन्स रे कोरल लीफ्स टोटली रहबनी सी गोटे एक्सट्रीम कंडीशन ने कोरल लीफ रही परिबनी एंड गोटे लाइक माने एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हॉट ए कंडीशन में कोरल लीफ रही परिबनी जदि एक्सट्रीम हॉट रे अछि ताले ऑटोमेटिकली ब्लीच हे जिवो एंड एक्सट्रीम कोल्ड रे सी क्रिएट हेबनी सो आइडियल कंडीशन होची 30 डिग्री नॉर्थ टू नेकी 30 डिग्री साउथ भीतर एंड इक्वेटर को छाडी देखि खास करी सो द आइडियल डेप्थ फॉर कोरल ग्रोथ आर 45 मीटर टू 55 मीटर बिलो द सी सरफेस मार्क दिस वर्ड एटा होची खाली प्रीलिम्स पाई
जोटा कि 45 मीटर टू 55 मीटर्स जोटा मु डेप्थ ता कहली किंतु आमे थ्योरी जिते पढ़िबा सेति आउ किछि इंटरेस्टिंग फैक्ट सब लिखा अछि ताकू मु पढ़ेबी ओके सो वेयर देयर इज abundant sunlight available फटिक जोन मने थियो फटिक जोन कोठी बिकॉज 200 मीटर पर्यंत जेतिकी एरिया रे सनरेज गुडी को डायरेक्टली पड़े बा पेनिट्रेट करके सी इनडायरेक्ट वे रे जाए दैट इज नोन एज फटिक जोन सो फटिक जोन रे माने कोन सनलाइट प्रॉपर्ली आस्तबो and the temperature of water should be around 20 degree celsius should be around 20 degree celsius okay पाखा पाखी 20 degree celsius पाखा पाखी हेतिबा दरकार now clear salt water is suitable for coral growth see fresh water भी coral growth हे परिबनी किबा brackish water भी हे परिबनी clear salt water is the best or suitable for coral growth and while both fresh water and highly saline water are harmful for polyp growth तो तार गोटे सर्टेन लाइक टेम्परेचर अच्छी सर्टेन डेंसिटी दरकार सर्टेन सालिनिटी दरकार सेटा इंपोर्टेंट ओके सो एडिक्वेट दैट्स व्हाई हमर डेड सी रे जो मैक्सिमम सालिनिटी अछि डेड सी रे कोरल्स देखा जायनी so adequate supply of oxygens and microscopic marine food called planktons is essential for growth and existence as the food supply is more abundant on seaward side and seaward side means samudra adku jota achi food abundant and coral grows more rapidly on the seaward sides coral samudra pakha pakhi jo shore area island ro pakha pakhi area re maximum grow karanti टिके ब्रेक नबा ओके जस्ट सेमी एतिकी पर्यंत काहारी बुझिबार किछि प्रॉब्लम हला ना सर ठीक अछि क्लियर अनीता पद्मिनी सलमान डोगरा Clear, sir. ओके क्लियर सर नाउ जिबा नेक्स्ट तो टाइप्स ऑफ कोरल हमें देखिबा थ्री टाइप ऑफ कोरल्स आर देयर बिकॉज ए जो कोरल फॉर्मेशन यार मध्य रिलेशनशिप अछि कोउतरे ना जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट रे प्लेट मूवमेंट आपण जानि छथि ओके लाइक इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ रे जते सब चेंजेस सब चलता है हमें एंडोजेनिक फोर्सेस द्वारा जे सब लैंड रो चेंजेस होता है सेटा मध्य रिलेटेड अछि तो भलो भाबरे हमें थ्योरी पार्ट रे कवर करबा किंतु बेसिक हमें नॉलेज गेन करबा बिकॉज थ्योरी पार्ट रे जते हमें पढिबा याकू एई कथा ही रिपीट हो किंतु अलगा इंटरफेस रे सो टाइप्स ऑफ कोरल लीव्स नाउ फ्रिंजिंग रीफ and barrier reef and जो थर्ड नंबर होची दैट इज नोन एज एटल एटल कोन जानिबा धीरे धीरे सो the basis of large scale reef morphology the size and the shape of the reef okay and its relations to nearby land if any जदि कोनसी पाखरे लैंड अछि तो ता सहित कोन रिलेशंस अछि So there is often a great deal of overlap among the major reef type within a given biogeographic regions in terms of dominant groups of animals and plants as well as their ecological interactions. So it is जो picture जेमति देखा अछि ताको भलो भाबरे माइंड रे सेट करनियंतु बिकॉज़ आपको जाय कि बहुत ही हेल्प करिवो ओके फ्रिंजिंग reef रो पिक्चर्स barrier reef रो पिक्चर एंड atoll रो पिक्चर now come to fringing reef fringing reef ro khasiyat kon importance kon it is by far most common of the three major type of coral reef जो तीनटा मध्य रे ये सबुठारु कॉमन ये सबुथिरे देखा जाय मैक्सिमम जगह रे so it is a coral platform attached to a continental coast or an island sometimes separated by narrow shallow lagoon or channels तो एठी कोन माने यारो कि एटा सेही कोरल लीफ जे कि अटैच्ड है कि ता कॉन्टिनेंट सहित कि आइलैंड सहित एंड ता पाखा पाखी जगह रे ही फ्रिंजिंग रीफ देखिबा पई मिले सो एठी जेमति पिक्चर देखाउजी पूरा अटैच्ड है कि these are known as fringing reef. Now, fringing reef runs as a narrow belt 0.5 kilometer to 2.5 kilometer wide, and this type of reef grows from the deep sea bottom with the seaward side sloping steeply into the sea deep sea. Steep जो हेतु sloping टा पूरा steep हेतु steeply into the deep sea. So coral polyps ए जो मु लाइन टा कहली ताकू मध्य माइंड रे सेट कर रखिते बिकॉज़ थ्योरी रे हेल्प करिवो पर्टिकुलर लाइन टा so it is again I am repeating this type of reef grows from the deep sea bottom with the seaward side right and sloping steeply into deep sea
स्लोप जदि स्टीपली जो अच्छी स्टीपली डीप स्लोप अटैच्ड ହେଇକି ଅଛି राइट अटैच्ड ହେଇକି formation हुए now coral polyps do not extend outward because of sudden and large increase in depth coral polyps ତା ମାନେ ହେଉଛି coral polyps ବହୁତ ହି ଭିତରେ formation କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ହି ଉପରେ formation ହେଇପାରିବେନି quite shallow water. So the surface of a fringing reef is rough as it is covered with coral remains forming a boulder zone or reef flat. ओके ये जेमती गोटे प्रोसेस रही गोटे रिफ तार डेड हो आ गोटे रिफ क्विकली फॉर्मेशन हो नाउ एटा देखि पारते फ्रिंगिंग रिफ रो पिक्चर देखा ओके then come to barrier reef kono got a barrier like structure wall like structure so this is the largest of all three okay ei jo tinta jo coral reef type mu कहली ताको भितर ये सबटर लार्जेस्ट जोटी भी फॉर्मेशन हुए तार एग्जांपल होची कोन who can give the example of barrier reef great barrier reef कोडी अछि एटा Australia. Australia. Okay, so it extend as a broken irregular ring तो ये continuous ring format रे ये जाए नहीं irregular माने कट कट हेतबो so it extend as a broken irregular ring around the coast or an island running almost parallel to it तो ये attached नहीं थो जेमती fringing reef attached हेतबो ये सेमती भाबरे attached हेई नथिबो ये टिके डिस्टेंस मेंटेन करके थिबो ता भितरे लाइक लेगुन्स गुडी को पसी आस्तबे एंड कंटीन्यूअस मैनर रे पुनी नथिबो ये ब्रेक हेकी थिबो ओके नॉन कंटीन्यूअस मैनर रे सो ए बैरियर रीफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंस लोकेशन of the reef from the coast with the broader and deeper lagoon, which is sometimes joined with seawater through one or more channels cutting across the barrier reef. So then a barrier reef is very thick, going even below 180 meters from the surface with the seaward side sloping steeply into the deep sea and the surface of barrier reef is covered with coral debris boulders and sands and the most famous example of this type of reef is great barrier reef okay water body achi okay these are the barrier reefs island. Now come to atoll. Atoll con it is a ring-like reef, ring-like structure which partly or completely enclosed a lagoon. The lagoon may have a level surface, but the seaward side of the reef slope steeply into the deep sea. The lagoon has a depth of 80 to 150 meters and may be joined with the seawater through a number of channels cutting across the reef. And atoll are located at great distance from deep sea platform where the submarine features may help in formation of atoll आगु जाके पढ़िबा कि atoll केमती formation हुए such as submerged island or a volcanic cone which may reach a level suitable for coral growth. Now, atolls are far more common in Pacific than any of the other oceans. So, Pacific रे एगुड़िक बहुत ही common. After that, India रे मध्य अच्छी like Fiji रे अच्छी Fiji atolls, okay, Funafuti atolls, LC atolls, and well-known example of atolls. A large number of atolls also occur in Lakshadweep Island. Okay, সেটা atoll দ্বারা formation হচ্ছে বা atoll তার structure ଅଛି. So in the South Pacific, most atolls occurs in mid-ocean. Okay, and example of this reef type are common in French Polynesia. Now, the Caroline and Marshall Island, Micronesia, and the Cook Island. एते सब coral गुड़ाको maximum देखा जाए. So the Indian Ocean also contains numerous atoll formations. For example, Maldives, Chagos Island group, Seychelles, and Cocos Island group. Now see this. This is the example of atolls. जोतरे की land totally नहीं. Okay, only ring-like structure. Then formation of Lakshadweep Island. केमती formation है Lakshadweep Island.
सो कंटिन्यू करिवा फॉर्मेशन ऑफ लाक्षाद्वीप आइलैंड जोटा कि एटॉल फॉर्मेशन द्वारा हेची इंडिया रे. So the basic coral reef classification schemes described above was first proposed by Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन को जो रिवोल्यूशन थ्योरी विवर्तनवाद से सेथिरे मेंशन करछंती केमती भाबरे कोरल रीफ गुडी को हमर फॉर्मेशन अछि. ओके सो डार्विन थियोराइज्ड that fringing reef began to grow near the shoreline. ये उपकूलवर्ती अंचल रे बा लैंड जोठी अछि तार कूल अंचल रे ही कोरल रीफ्स देखा जाए जोटा कि फ्रिंजिंग रीफ of new island as ecological condition become ideal for hard coral growth. Then, as the island began to gradually subside, ଯେତେବେଳେ subsidence theory ଏଟା କଣ କହୁଛି subside କରିବ ଭିତରକୁ ଯିବ into the sea, the coral was able to keep pace in terms of growth and remained in place at the sea surface, but further from shore, and it was now a barrier reef. So यार simple ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ reef ଟା ଦେଖେଇଥିଲି. Okay, just see this picture. तो ये हमको फास्ट फ्रिंजिंग रिप जोटा कि कनेक्टेड ही अछि पहाड़ रे तापर किछिटा लाइक भीतर को पळे गला पर एठी बैरियर रिफ क्रिएट हो जोटा कि अल्टरनेटिव वे रे ता सहित कनेक्टेड थिला बहुत वर्ष पूर्वे एंड धीरे धीरे से कोन होची ताठरो डिस्टेंस हिची एंड जेतेले एई जो डिस्टेंस हम देखि परछु एथिरे जेते एलिवेशन थिला एथिरे सेति कि नै एंड एई टाइम रे सेति कि एलिवेशन आहुरी डाउन हिजबो. ओके सो एथिरे कोन फॉर्मेशन होबो एटॉल फॉर्मेशन हो जो कि लैंड बा आइलैंड कौन सी भी जिनस एठी देखा जाए नहीं गोटे बैरियर लाइक स्ट्रक्चर राउंड लाइक स्ट्रक्चर देखा जाए. ओके now see eventually the island disappeared below the sea surface and leaving only the ring of coral encircling the central lagoon and atoll had formed. Okay, now, see this picture, ये होची volcanic activities, fringing reef, barrier reef and atolls. So, एटी volcanic activity जो देखागला कोदि पे देखागला just answer. तो ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି सी फ्लोर स्प्रेडिंग रे कहबे ना मिड ओशनिक रीज जेतले हुए बा volcanic एक्टिविटी द्वारा volcanic आइलैंड सब फॉर्मेशन हुए. एई जो फॉर्मेशन हला परे कोन हुए पानी तो थाई जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्लैंक्टन्स जस्ट अ मिनिट ସେମାନେ ଏଇ ଉପକୂଳ ଇଲାକାରେ ଆସିକି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆକୁମୁଲେଟେଡ ରକ୍ ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଜମା ହୁଅନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଜମା ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ କୋରାଲ ଲିଫ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି. Now distribution of coral कोठी कोठी देखा जाए coral exactly because एटा ऊपर ही डिपेंड करे हमर टूरिज्म सेक्टर मध्ये जोतरे कि इकोनॉमिक जनरेट करियो तो majority of reef building corals are found within the tropics and subtropical waters, and these tropically occur between 30-degree north and 30-degree south latitudes. And the Indonesia, Philippines and Philippines archipelago has the world's greatest concentrations of like reef and greatest coral diversity. Okay, other areas of reef concentrations are like are the Great Barrier of Australia, the Red Sea, the Caribbean, the latter having a much lower density than all major Indo-Pacific regions. Now, world's major coral reef regions like uh, Caribbean or Western Atlantic, Eastern Pacific, and Central and Western Pacific, Indian Oceans, Arabian Gulf, and Red Sea.